डाउन नहीं डाउन की मैं कर दूंगा। गुड आफ्टरनून of this seminar. Let me share a story with you all. The story is about the power of sharing knowledge. Once, in a small village, there was a wise old man who loved to teach others. Asked, why do you keep teaching us? So this is a message. This is a message of the seminar. Knowledge and give shade to others. Here are some in the ideas. Let's go. We learn and together will shine and make the world good. These simple lines remind us that knowledge is not just something to get, it is something to share and use to make the world a better place. So let us continue this journey with minds and open hearts. Now we are entering all of you in this session. Case, research is radiation physics and serving for this talk, and all will be very
Uh, Good afternoon. Very much organizing for issues of our time, that is energy challenges and the promises of sustainable alternatives. How our growing energy needs intersect with the sustainability innovations of our planet. As Sheikh Yamini famously said, the stone age did not end of stones, and the oil age will end long before the world runs out of oil. This is humankind which is working ever. Do not wait for the and finding some other ways timely, and hence at the present people are working to meet the needs of the future without waiting for the end of the pipe. So, as the topic is related to energy, energy is very important. If we begin with brief look at the current global energy challenges, why they matter more than ever, and then move on to explore promising sustainable alternatives, including renewable energy, technologies, innovative materials, and evolving policies shaping this transition. Finally, we'll discuss there are headed and what is kind of word we can create if we embrace sustainability as both necessity and an opportunity. As this diagram indicates that energy has been used or being by the mankind by various ways. The main that 1800 to 1800 and it shifted to oil, nuclear energy is being used and challenges. Why today consumes more energy than any point in the history. As and economies grow, the demand of energy keeps accelerating. Yet almost 80% of the energy still comes from the fossil fuels. This dependence has come to a cost. We are facing rising greenhouse gas emissions, then global warming, extreme weather event that threaten both people and ecosystems. But the problem isn't just climate related. Access and equity are also major concerns. Nearly 750 million people worldwide access electricity. Others consume energy in excess. This distribution is not good. So the energy challenges isn't just about producing more, it is about producing smarter, cleaner, and fairer methods. Otherwise, the diagram shows that how
energy production has increased with the time. So climate and emission crisis, here global carbon emissions continue to rise even though more awareness and better technology than ever before. Fossil fuels consumption hasn't yet peaked. Melting glaciers, forest fires, and heat waves we see every year aren't distant problems anymore. They are here and they are accelerating, which means we need urgent and systematic change in how we produce, store, and use the energy. If we see the diagram, it shows that China is using more energy and even producing, yes, and similarly other, but it's not, distributed so good, and only few people or few countries, humankind, they are using in excess, others are not. We need to change. This brings us the question, why must we change and why no? Why no? That's important. Because sustainability is no longer an option, it's a necessity. In Paris Agreement, sorry, the COP conference, and United Nations Sustainable Development Goals 7 all reflect that global consensus that we must transition to clean, affordable, and reliable energy systems. Many nations, including India, have committed to achieving net zero emission in the coming decades. We are also working for that. India as a country is working for that and planning to have zero emission up to 2050. But the real transformation will come not just from policies, it will come from the innovations. You cannot simply make policies to make it zero because needs are still there. Uh, we need to make some needs is required. We cannot deny for that. So we need to go for sustainable energy alternatives. In the clean energy transitions, the renewable energy is the option. Solar energy continues to lead the way with costs dropping dramatically over the last decade. Industries are working on that. If you just compare the cost previously, that was more. Nowadays, because on and instruments are being made in masses, so cost has dropped, and we have seen so many solar panels on the rooftops nowadays. So other is wind power, both onshore or offshore, has become essential national grids, hydropower, biomass, due to diversify our renewable mix. The idea is simple. No single source can do it all. The future lies in balanced hybrid energy ecosystem where different renewable complements to each other. Alongside renewable energies, revolutionary technologies emerge, green hydrogen producing using renewable electricity. It can store energy for months and power stores that are hard to electrify, like steel and shipping. Then we have advanced energy storage systems, batteries, supercapacitors, and even flywheels essential for balancing this intermittent sources
sources like solar and finally grids integrated with the artificial intelligence energy in the real time. Efficient, low carbon new technologies like small modular reactors are addressing the safety waste concerns. But perhaps the most exciting frontier is nuclear fusion, replacing. Uh, I think some of the students may be aware of ITER, which is International Nuclear Experiment Reactor, which is we are working on that, and so many European, US, they are the participant over there, and they are trying to make a device, ITER device, we call that tokamak, and if it will be possible, if they are able to, then it will be the world's largest capable creating a little star on the earth. It will meet the needs. So material and technology innovations. Now here where things get even more exciting and closer to my field also. Behind every breakthrough in energy technology lies a breakthrough in material science. For example, nanomaterials, perovskites, they are transforming solar energy. Perovskites offer high efficiency and can be produced cheaply. So, a lot of research is being carried out. I think there are some papers in the SEC book I have seen where people are working the perovskite materials also. Maybe a review has been given, I think, and perovskite offer high efficiency and can be produced cheaply, even on flexible or transparent surfaces. Imagine solar windows or energy harvesting fabrics. In solid state batteries, we are replacing flammable liquid electrolytes with solid materials, improving safety, lifespan, energy density, and that is critical for electrical vehicles and large scale grid storage. And for carbon capture and utilization, materials like metal organic frameworks and nanopore solids, they are making it possible to trap carbon dioxide and convert it into useful chemicals or fuels. So whether it's generating, storing, or cleaning energy, advanced materials are the real enablers of sustainable progress. Um, Here, my student has worked with this nickel cobalt duopane ternary nanocomposite. So we have actually put, so many people are working in the materials to have the material which can store energy as a supercapacitor. So we are also in the try improving their efficiencies. This is the detail of the paper. And another material which is there, that is amzine. It was discovered in 2011, and after that, if you see many researchers on the same,
have attracted significant attention due to their flexible elemental composition, distinctive 2D layered architecture, and surface. If you see the Nobel Prize this time given in chemistry, that is on metal organic frameworks being used, although it's creating a kind of, porous material which can gather more carbon dioxide. You can collect more carbon dioxide over there, but at the same time, people can work for storing energy also because it's providing more specific surface area over there. If you just talk about this metal organic framework, so it's a spongy-like material formed by linking metal ions or clusters. I think it will be, a kind of flood will be coming because Nobel Prize has been given on the in the field, so many people will be interested to work on that. Although people were working for MGN and other composite material, but when again this metal organic framework is coming in picture with Nobel Prize, so again a kind of shift will be there. Although many people worked on this one, but again a kind of shift will take place. So those who are actually from chemistry, I think, and some people from material science, they may be aware and they will be trying to grasp it also. Now, if we go for some societal and policy dimensions, technology alone isn't enough. We also need supportive policies and public participation. Government worldwide are offering incentives for renewable energy. From India, National Solar Mission to the European Green Deal and US Inflation Reduction Act. So all are actually working to promote green energy. But the real change happens at the community level through decentralized systems like rooftop solar, village micro and cooperative energy models. The more people become energy producer, not just consumers, the faster this transition will happen. Barriers, uh, obviously barriers are expected and they has to be there in the way. That's why the things has to be done. So of course, the transition isn't without obstacles. Renewable systems still face issues like intermittency. The sun doesn't shine for 24 hours and wind doesn't always blow. So there is a limitation in one of the field, obviously. So energy storage technologies are improving, but cost remains high. And there are still strong economic and political dependence on fossil fuels that slow down the change. However, if history has taught us anything, it's that innovation and determination can overcome such barriers. The road ahead, the future of energy lies in integration, combining renewables, nuclear storage, and smart systems into one intelligent, resilient network. It also lies in ensuring a just transition, one that provides new opportunities, protects workers, and ensure equity. Cross-disciplinary research and international collaboration will be key achieving our shared goals, a carbon neutral planet by 2050, which is the goal.
and every government is actually working for the same. There are some case studies. You can already see these ideas in action. India's Vadla solar park, one of the largest in the world, produces more than 2 gigawatt of clean power. Germany's energy vents is leading the charge towards a renewable based economy, and in remote regions of Africa and India, microgrids powered by solar are bringing electricity to villages for the very first time. And these are few examples which reminds us that progress is possible, is already happening. So to conclude, the words energy challenges are immense, but so is our capacity for innovation. The solutions from renewables and advanced materials to new storage and carbon capture systems. These are not dreams of the future. They are being built today in labs, factories, and communities around the world. The transition to sustainable energy is not just a scientific challenge, it's a moral imperative. The choices we make now will determine the kind of planet we leave for the next generation. Thank you for attention, and we have for that. And any question, I will be happy to see. मुझे लगा शायद question. Thank you, sir. So, about the topic of Dr. Mukesh, sir has taken a topic on energy challenges and the promise of sustainable alternatives. So, you have seen that energy is the backbone of our economic growth, human development, and the quality of life. And we also want uh, alternative, but alternative also in the form of sustainable alternative, because you are looking that there is a global warming and energy is increasing in the term of carbon dioxide. So we have to reduce this carbon content. So new innovations are required. There is a work on role of nanomaterial. We are producing advanced batteries. We are also looking for composite materials that can absorb these uh, carbon emissions. And our vision is by 2050 we want a neutral zero carbon emission. So we have to think very serious on this. So this is a very good topic for future, that we should work together in this field. And it's a good talk. And thank you, sir, for this valuable talk. Thank you very much, sir. So next is by Dr. Abhishek Diwan, Department of Applied Science and Humanities, Government Hydro Engineering College. Utilization of agriculture
products for remediation of environmental pollution, a sustainable approach toward circular economy. So, sir, I welcome you in this session and kindly deliver your talk, sir. Good afternoon, all of you. First of all, I would like to thank the organizers for having me here. Especially want to thank you, Dr. Atul Gupta, who has been my guide since the first day I started my research. He has been guiding me till now also. So, as the topic of this current seminar is integrating all the domains of knowledge. So I hope that the audience among us belong to the every section of the society, and every I can see young people, I can see older than them and older than them. So every section of society is present over here, and I also hope that since Gumarvi College is a very wide college, it involves a lot of disciplines. The students from different disciplines are present here. So I will keep the lecture, this talk extremely simple. I will keep this lecture so simple that everyone can understand it, but I will divide it into two parts. First part is understanding the problem. What is the problem in our society? I will start it with the society, and I will finish it with the scientific solution. If you have any suggestions, if you have any questions with me during the lecture, you are always welcome. You can stop me. You can ask me any question about the topic I'm discussing. Right. So the topic of my topic actually I like to talk when I present any lecture. The topic is agriculture based into the environmental solutions. So everyone these days, we're talking about that. You go to any institution, any college, any school, everyone is talking about the environment. And as far as the environment is concerned, I think that the problem doesn't lie in the solutions. Problem is that we don't have understanding that how the environment, right? So first of all, we have to understand the problem. The problem starts with this. And to feed 9.8 billion people, we need more food, we need more water. Parallelly, India's population growth, it has continuously increasing. We are going to be 1.7 billion by 2050, right? And with this increase in population, there will be increase in the food demand. And increase in the food demand will lead to agricultural expansion, right? So that is what every country is doing. हर देश में हर देश में हमारे क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि हमने क्रॉप इस बार इतना ज्यादा जो है वो गेहूं पैदा कर दिया, इतना ज्यादा राइस पैदा कर दिया, इतना ज्यादा जो पैदा कर दिया। और ये ट्रेंड आज नहीं चल रहा, ये कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। जब से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद इंडिया की फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ ही रही है। देयर इज अ ग्राफ, प्लीज, दिस इज अ ग्राफ ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर लास्ट 10 years। तो देखिए कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है राइस प्रोडक्शन में है। और प्रोडक्शन तभी होती है जब आपकी डिमांड होती है, और डिमांड इसलिए है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम वी आर गोइंग पेस्टिसाइड, वी आर गोइंग फर्टिलाइजर। द अल्टीमेट थिंग इज आई एम मैन ऑफ केमिस्ट्री, वी आर गोइंग केमिकल्स इनटू
So that is what everyone is going to increase the demand to complete this demand. And the second thing is we are developing the habit. जिसमें जो है वो पौधा छोटा हो और जो आपका जो क्रॉप है वो ज्यादा लगे. We are approaching that second thing, right? Now see the graph of wheat production of India. It is also increasing. See the graph of sugar cane production in India. It is also increasing. And if we continue researching like this, if we continue doing like this, तो automatically 2050 में 9.8 बिलियन की जगह अगर 10.8 बिलियन पॉपुलेशन भी होगा तो हम उसकी फूड डिमांड को पूरा कर लेंगे, राइट? बिकॉज़ गवर्नमेंट्स दे आर डूइंग इट, दे हैव टू डू इट. हम किसी न किसी तरीके से उसको कंप्लीट कर लेंगे, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, चाहे हमें जितने लगे केमिकल आपकी सॉइल में होगा, इट्स फाइन, ओके, इट विल बी डन. बट एक चीज है जो हमेशा हमसे स्किप हो जाती है, वो ये स्किप हो जाती है कि अच्छी बात है हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, हमारे कंट्री का जो सिटीजन है वो खाना खा रहा है, एक्सपाइन. लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसको इग्नोर किया जाता है, वो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको पता है, जिसको पराली के नाम से जाना जाता है, राइट? तो जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमारी जो क्रॉप रेजिड्यू की प्रोडक्शन है वो भी तो बढ़ेगी, राइट? अब क्रॉप रेजिड्यू जो है आज के टाइम में 2025 में इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम इन नॉर्थ इंडिया, राइट? एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन फॉर दैट इज दिस, राइट? पराली को जलाया जा रहा है, राइट? अब मैं ये नहीं कहता यहाँ पे स्टेज पे या कहीं भी, ये फैक्ट है ही नहीं कि सारी की सारी जितना भी आपकी पराली जनरेट होती है उसको जलाया जाता है, ऐसा नहीं. इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट. इसको इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, बॉयलर में यूटिलाइज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है. इसकी पाइजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे स्टूडेंट अभी सिविल इंजीनियरिंग के उसके बारे में बताएंगे, राइट? तो इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट. और इतना यूजफुल होने के बाद भी इसको जलाया जाता है, दैट इज फैक्ट एंड एवरीवन नोज दैट. और जो इंसिडेंसेस है उसको जलाने के और जो पोल्यूशन लेवल है उसको जलाने से वो डे बाय डे जो है पर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है. गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्कीम लॉन्च कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली द रिजल्ट इज जीरो, राइट? एयर पोल्यूशन इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग पर ईयर, राइट? नाउ अब ये तो हमने पराली के बारे में सुना, लेकिन आपने ये चीज थोड़ी कम सुनी है. अब व्हीट रेजिड्यू है, जो गेहूं से जो हमारा भूसा आता है उसको हिमाचल में जानवरों को डाल दिया जाता है और लोग खरीदते हैं, पैसा देके खरीदते हैं. लेकिन 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है, मध्य प्रदेश में 31,000 के आसपास इंसिडेंसेस व्हीट रेजिड्यू बर्निंग के आ चुके हैं. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन बिहाइंड दैट इज कि क्रॉप प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है और आपके जो एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है. जब एनिमल्स होंगे ही नहीं तो गेहूं का भूसा भी कौन खाएगा? और आज 2025 का इमेजिन मत करिए, आप इमेजिन करिए कि 2050 में क्या होगा, कितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी और कितने ज्यादा लोग हमारे आसपास जो है वो एनिमल्स को रख रहे हैं, राइट? दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द कमिंग फ्यूचर, राइट? और उसकी वजह से आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगा. ये देखिए, ये जो क्लिपिंग है यहाँ से मैंने ली थी, मई 9 2025 का ये इंसिडेंस है, जिसमें उन्होंने 31,000 केसेस जो है मध्य प्रदेश में रिपोर्ट किए थे व्हीट रेजिड्यू बर्निंग के, जो कि हिमाचल में प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, करते ही नहीं है, राइट? और ये जो 31,000 है, आने वाले 10 साल में इट विल बी 1 लाख एंड 2 लाख इजीली, राइट? नाउ कमिंग टू द शुगर केन. पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीनी लोग खा रहे हैं, मिठाई लोग बहुत ज्यादा है, मिठाई की दुकानें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो विदाउट शुगर केन इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन दोस थिंग्स, राइट? और शुगर केन रेजिड्यू की बर्निंग ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है. इसलिए मैंने सिर्फ कटिंग लगाई है सिर्फ न्यूज़पेपर की, ये 2016 की कटिंग हो, 2025 की मुझे मिली नहीं, राइट? तो शुगर केन रेजिड्यू का बर्निंग की एक प्रॉब्लम है. नाउ अगेन कमिंग टू द प्रीवियस पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि जितने भी रेजिड्यू हैं इन पे कोई काम नहीं हो रहा है, क्रॉप रेजिड्यू पे कोई काम नहीं हो रहा है, या इन रेजिड्यूज का कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है. मैं ये बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज है. तो अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे तो हम ये पाएंगे कि राइस स्ट्रॉ से बहुत सारी चीजें बनती हैं. मीडियम डेंसिटी फाइबरबोर्ड बनता है, पैकेजिंग में इसका यूटिलाइजेशन होता है, टेबल वेयर बनाने के लिए आपकी जो कटलरी है, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे बड़े अच्छे से मिलेगा आपको, राइस स्ट्रॉ बेस पे कटलरी बनाने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है, राइट? इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हैं, राइट? आपका गन्ने का जो भी रेजिड्यू होता है, आपका गेहूं का जो भी रेजिड्यू होता है, आपका राइस स्ट्रॉ का जो भी रेजिड्यू होता है,
उसको मिला के ब्रैकेट बनाई जाती है जो कि अल्टीमेटली इंडस्ट्री में यूज होती है। अगर 1 रुपए आप पराली खरीदते हो तो 8-9 रुपए में वो ब्रैकेट जो है वो बिक जाती है, इंडस्ट्रियल सोल्यूशन। तो ये स्लाइड दिखाने का मेरा मतलब ये था आपको कि ऐसा नहीं है कि जो क्रॉप रेजिड्यू आज प्रोड्यूस हो रहा है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, लेकिन वो 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा। और 2050 तक अगर हमारी फूड डिमांड डबल हो जाएगी तो हमारा क्रॉप रेजिड्यू प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा। तो अगर हम आज ही उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो 2050 में हम कैसे हैंडल कर रहे हैं? दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, राइट, जिसको यूजुअली जो है वो आई कैन से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 is growing water scarcity. पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। We are just pumping out water from the earth and doing nothing. We are not giving back water to the soil. We are just pumping it out. राइट, तो कुछ एक डाटा है जो मैं आपके सामने शो करना चाहूंगा। वो तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि सिर्फ 0.5% जो आपका फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको हम पीने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर को हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। और जितना पानी कंज्यूम होता है उसमें से 80% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, प्लीज कीप इट इन माइंड, 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है, राइट। और 2030 तक इंडिया की जो वाटर डिमांड है वो डबल हो जाएगी, राइट। जो आज डिमांड है उससे ज्यादा डबल हो जाएगी। आज भी ये डिमांड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइम इंडिया का वाटर चैलेंज अगर हम देखें तो ये 4 फैक्टर उसको डिमांड करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सबको पता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपको करनी पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर सप्लाई आपकी शिफ्ट हो रही है। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटर कंटेमिनेशन। वाटर कंटेमिनेशन की जा रही है थ्रू द इंडस्ट्रीज एंड थ्रू द हाउसहोल्ड्स। और वाटर कंटेमिनेशन की इंडिया में स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वाटर चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, राइट। एक रास्ता है वाटर ट्रीटमेंट, पानी को हम ट्रीट कर दें, ठीक है, जो पानी हम यूज कर रहे हैं उसको हम ट्रीट कर दें। और दूसरा है लिमिटेड वाटर यूजेज। और लिमिटेड वाटर यूजेज जो है ये टोटल सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, right, that how can we limit our water usage. But the problem is मैं जहां पे भी जाता हूं मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं कि जिसके घर में आज शावर नहीं है उसको इच्छा यही होती है कि मैंने अपने घर में शावर लगाया। और जब आपने अपने घर में शावर लगा दिया तो आप कभी भी वाटर यूज को लिमिट नहीं कर सकते। वाटर वेस्टेज उस दिन से शुरू हुई थी जिस दिन से हमारे घर पे टंकियां लगनी शुरू हुई थी, और वो अच्छी बात नहीं है। डेवलपमेंट शुड बी देयर, बट दिस इज द ट्रुथ, राइट। जब आपको बाल्टी भर कर पानी लाना पड़ता था तब एक बाल्टी से सारे बर्तन धुल जाते थे। आजकल जो है वो पानी चला रहता है 2 घंटे, उसके बाद बर्तन धुलते हैं। एंड इट इज अ फैक्ट कि हमें प्रॉब्लम नहीं है। वी वांट, कोई एक बंदा बोले तो भाई क्यों नहीं, हम क्यों ना करेंगे, कोई बात नहीं करिए, लेकिन इतनी बात श्योर है कि आप अपने फ्यूचर वाले जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, 100% श्योर। तो लिमिटेड वाटर यूजेज जो है ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, दे कैन डू इट वेरी वेल देन मी। नाउ व्हाट इट कैन बी डन। केमिकल प्रोसेस जो फ्रेश वाटर हमारे पास आ रहा है वो जब आ गया, दैट इज द ड्रिंकेबल वाटर, वो हमने यूज कर लिया तो उसको एटलीस्ट हम ट्रीट तो कर सकते हैं ना, वी कैन ट्रीट दैट। बट व्हाट आर द वाटर, देयर आर सो मेनी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो कि इंडिया में अवेलेबल है, राइट। कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट है, इसको मैं नहीं जाऊंगा, जो कि हमारे घरों में जो पानी आता है वो कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट से ट्रीट हो जाता है। उसके बाद आरओ है जो कि इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद एनारोबिक है, बहुत सारे और भी मेथड है वाटर ट्रीटमेंट के। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट मेथड के साथ प्रॉब्लम ये है दैट दे आर हाईली एक्सपेंसिव। अगर वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स एक्सपेंसिव ना होते तो इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री जो है अपने पोल्यूटेड वाटर को रिवर्स में नहीं फेंकती, व्हिच इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया, राइट। The reason for that is कि उनको वाटर ट्रीटमेंट में जो पैसा है वो ज्यादा लगता है और वाटर को पंप आउट करने में पैसा कम लगता है। तो वो बोलते हैं भाई हम पंप आउट कर लेते हैं, 50 साल बाद इसमें देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, डजंट मैटर। तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए वाटर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वन थिंग इज दिस। नाउ द अदर थिंग, अब मैंने ये सारे इंडस्ट्रियल, अभी तक जिसमें वाटर की बात कर रहा था उसमें इंडस्ट्रियल ये सारी चीजें जो है वो कवर की। अब लेट अस कम टू द डोमेस्टिक, राइट। अगर डोमेस्टिक वाटर की आप बात करें तो 2050 तक डोमेस्टिक वाटर की जो
डिमांड है इंडिया में डबल होने वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा क्यों डबल, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है कि इंडिया में कितने लोगों को पानी एक्चुअल में प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये ग्राफ हर साल 2001 से लेके 2031 तक प्रोजेक्शन है वो कम होता है, राइट। डिमांड बढ़ रही है और जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, राइट। हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2, राइट। एक तरफ क्रॉप रेजिड्यू का प्रॉब्लम है एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2, ये बढ़ता जा रहा है। अब आज के टाइम में देखिए डोमेस्टिक, नाउ आई एम कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डोमेस्टिक वर्ल्ड, राइट। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि पानी पंप आउट हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, उसके बाद घरों में आने के बाद उस पानी को के साथ क्या किया जा रहा है, जो भी उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद आपकी पाइप में चला जाता है। पाइप में जाने के बाद उस पानी के साथ क्या होता है, कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता कि उसके साथ क्या होगा, क्या, ठीक है। इंडस्ट्रीज के लिए हम चिल्लाते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज को वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो इंडस्ट्री अपना नॉर्म कॉलोनी कर रही है, लेकिन इस घर से जो पानी निकल रहा है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो ये डाटा। इस डाटा में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन सिंपल सी बात है कि जितना भी पानी घरों में सप्लाई होता है उसमें से सिर्फ 37 to 44% वाटर जो है वो पानी ट्रीट होता है। मोर देन 50% वाटर जो कि आपके घरों में आता है, जो कि शुद्ध पीने वाला पानी होता है, जिसको ट्रीट करके दोबारा से पीने लायक बनाया जा सकता है, मोर देन 50% वो वाटर दैट इज नॉट ट्रीटेड इन इंडिया। Then how we are going to meet our water demand? How we are going to meet our demand for the agricultural water, जिसको 80% से शेयर लो आज भी चाहिए। और अगर एग्रीकल्चर को पानी नहीं मिलेगा तो फूड डिमांड कैसे पूरी, राइट। ये चीजें जो हैं ये सोचने वाली है। सी ये जो फोटो है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब हम इमेजिन कर रहे हैं डोमेस्टिक वाटर के साथ क्या होता है। तो डोमेस्टिक वाटर को जनरली या नालों में फेंक दिया जाता है, या आपके घर के, अगर जैसे मैं ऊना से हूँ, हमारे साइड तालाब होते हैं, तो तालाब की तरफ जो नाली बनी है तालाब में घुस जाएगा, गंदे होता रहेगा। ये सेम केस मैंने हिमाचल का एक रियल फोटो किसी बच्चे ने दिखवाया था अभी पिछले दिनों, जगह का नाम नहीं मैं बताऊंगा। इसके आसपास घर हैं, तो मैंने वहां लोगों से बात करी, तो दे सेड कि आज से लगभग 20 साल पहले इस पॉन्ड के पानी को इरिगेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे जो है पानी की फैसिलिटी जो है वो बढ़ी, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में हार्पिक आया, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में कोलिन आया, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में विम बार आया, आई एम नॉट मेंशनिंग द कंपनीज, राइट, ये इट मे बी एनी कंपनी, लेकिन जैसे जैसे इन चीजों का यूटिलाइजेशन बढ़ा तो हमारे डोमेस्टिक वाटर में जो एसिडिक, बेसिक एंड टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो है वो ज्यादा, जब वो कंपोनेंट्स ज्यादा हो गए, वो पानी हमारे पॉन्ड में गया और उसने हमारे पॉन्ड को कंप्लीटली वैनिश कर दिया, जहां पे यहाँ पे पहले मछलियां भी हुआ करती थी, अब मछलियां भी नहीं होती हैं, और ये पानी जो है वो खेतों में पानी देने लायक भी नहीं होता है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि डोमेस्टिक वाटर एक बहुत लार्ज स्केल बनाता है, लार्ज प्रोपोर्शन जो है हमारे फ्रेश वाटर का कंज्यूम करता है, और हम उस पानी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ओके, इट्स फाइन, ट्रीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, राइट। सो व्हाट कैन बी डन? तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चर वेस्ट क्राइसिस, किचन वेस्ट वाटर को जो नेग्लेक्ट किया जाता है, और तीसरा जो है वो ग्रोइंग वाटर स्कैर्सिटी। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन की तरफ जो है वो सोचा, राइट। सॉल्यूशन से पहले आपको मैं एक बार प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम कि डोमेस्टिक वाटर जब डायरेक्टली या तो आप अपने खेतों में फेंक दोगे जहां वो सूख जाएगा, गांव की बात में कर रहा हूँ, रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, या आप जो है किसी पॉन्ड में फेंक दोगे, अल्टीमेटली जब आप खेतों में पॉन्ड फेंक दो सॉइल पोल्यूशन होगा, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होगी। पॉन्ड में फेंक दोगे वाटर पोल्यूशन होगा, अल्टीमेटली जब वो वाटर ट्रीट नहीं होगा प्रॉपर्ली, वो आपके सॉइल में प्रॉपर्ली सीप नहीं होगा, इट विल लीड टू वाटर स्कैर्सिटी, राइट। दीज आर द थ्री प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, these are again four problems, और एयर पोल्यूशन जो आपकी क्रॉप रेजिड्यू, तो दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। एक प्रॉब्लम थी क्रॉप रेजिड्यू की, दूसरी प्रॉब्लम थी वाटर पोल्यूशन की, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन। So we came up with the idea that let us convert
domestic wastewater into water suitable for irrigation. आई एम नॉट सेइंग कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके मैंने पीने के लायक बनाना है, नहीं, मेरे को नहीं बनाना है, राइट। उसके लिए टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही महंगी है, उसको हम सस्ती करेंगे, आपका होता है, राइट। लेकिन अभी मेरे को सिर्फ वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बना, तो उसमें मेरा इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, इतना ज्यादा रिसोर्सेज जो डायरेक्ट नहीं है। तो किस तरह से किया जा सकता है इसको, ये सोचने वाली बात। देन I have worked in the field of polymers for 2000, 2010. So keeping that thing in mind, I thought that the natural fibers can be used as an adsorbent for the pollutants. Natural fiber लीजिए, क्रॉप रेजिड्यू लीजिए, पराली लीजिए, गेहूं का वो लीजिए, शुगर केन का रेजिड्यू लीजिए, उसको पानी में डालिए, तो क्या वो पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है? ये थॉट था। और अगर वो पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, देन इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज रूरल इंडिया में आपके मान लेते हैं जैसे कि हमारा कॉलेज बंदला में अगर पराली वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बद्दी की इंडस्ट्री में नहीं पहुंचा सकता, इतने की तो पराली नहीं होगी जितने का उसका पेट्रोल लग जाएगा, राइट। तो हमको रूरल इंडिया के लिए लोकल सोल्यूशन देना है, तो हमको वहां के ही फाइबर यूज करके वहां का ही पानी जो है ट्रीट करना, and that can be done by using the process of adsorption. So we started experimenting on that, हमने उस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सो सबसे पहले हमने दो मॉडल पोल्यूटेंट्स लिए, एक लिया हमने क्रिस्टल वॉलेट डाई और दूसरा लिया रोडन। ये डाइस है, टॉक्सिसिटी होती है, इनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो एमएससी के स्टूडेंट्स होंगे उनको आइडिया होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बड़ी इजीली हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं इनकी कंसंट्रेशन, राइट। हमने दो मॉडल पोल्यूटेंट्स लिए, उनकी फिक्स्ड कंसंट्रेशन ली, उनमें फिक्स्ड अमाउंट 4 ग्राम्स ऑफ राइस स्ट्रॉ पराली हमने काट के इसमें डाल, राइट। 48 घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए ये दो पॉल्यूटेंट हमने उसमें डाले थे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आफ्टर 48 आवर्स 73% of crystal violet and 66% of rhodamine dye was removed from the solution. जो वेस्ट है जिसको जला दिया जाता है, हमने उसको पानी में डाला और उसने वहां से पॉल्यूटेंट absorb कर लिया। It was a very good result when we observed that it is okay, it's fine, it's working and all. Then we thought that let us take it to the next level, right? So we were talking about the domestic wastewater. ये तो हमारा lab experiment था जो हमने lab में किया था, right? We were talking about the domestic wastewater. अच्छा, इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। तो हमने एक सिस्टम बनाया, राइट। प्लीज इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमने किचन वेस्ट वाटर कलेक्ट किया हमारे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस से। हमारे मेस में लगभग 800 से 1000 बच्चा खाना खाता है, वहां से हमने किचन वेस्ट वाटर कलेक्ट किया। उसको कलेक्ट करने के बाद उसको हमने सेटल बना लिया, फिर हमने एक ये सिस्टम डिजाइन किया, इसको सैंड फिल्टर बोलते हैं, राइट। सिविल के बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सैंड फिल्टर की जो कंसंट्रेशन थी वो ये, ऊपर इसमें पोस्ट लेवल थे, मीडियम लेवल थे, सैंड था और राइस था। इन द सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे मोटी बजरी थी, यहाँ पे पतली थी, उसके नीचे रेत था, उसके नीचे राइस था। तो सैंड फिल्टर है, कोई नई बात नहीं है, बहुत टाइम से इसको वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसमें 250 ग्राम राइस स्ट्रॉ जो पराली का था, 2 सेंटीमीटर के पीस जो है वो कट करके इसमें डाल दिए। वो इसलिए डाले कि हमने पहले ऑब्जर्व किया था कि वो पॉल्यूटेंट को अब्सॉर्ब कर सकता है, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में हो आएंगे, राइट। बट इस टाइम इस बार हमारा जो पोल्यूटेड वाटर था वो पिछले वाले पानी से थोड़ा सा अलग था। वो हमने लिया था किचन वेस्ट वाटर, ठीक है। जब वो बर्तन धो रहे थे उसमें ऑयल था, सर्फेक्टेंट था, देयर वर सो मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन दैट। तो उसके बाद इस तरह से हमारा जो सेटअप है, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हमने सैंड फिल्टर बनाया था, नीचे हमने राइस वाटर लगाया। अब इस फिल्टर का बेनिफिट क्या है? इट विल रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी, लो मेंटेनेंस, इफेक्टिव कंटामिनेंट रिमूवल, और इसकी इजी इंस्टॉलेशन हो गया। स्केल इसका जितना मर्जी बड़ा करना रहे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, राइट। ये इसका बेनिफिट है। सो व्हेन वी डिजाइन्ड इट, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वी डिड इन द लैब। हमने लगभग 25 लीटर की एक वाटर बॉटल जो बिस्लरी टाइप की आती है वो हमने खरीदी, उसको हमने ऊपर से काट दिया, ये अपसाइड डाउन इसको रखा, और ये इस तरह से लेवल है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। और ऊपर से हमने 30 लीटर पानी जो है वो किचन वेस्ट वाटर का इसमें से डाला, और 250 ग्राम हमने सिर्फ राइस फ्लोर में दिया। एंड दीज वर द रिजल्ट्स। These was the results very beautifully.
कि जब हमने किचन वेस्ट वाटर कलेक्ट किया था तो उसकी टर्बिडिटी 1386 एनटीयू थी, और जब हमने बाहर निकाला उसकी टर्बिडिटी 7.44 एनटीयू रहेगी, राइट? The turbidity was almost removed, right? pH was 6.3, slightly acidic. Acidic water is not good at all for the soil. अगर कोई सॉइल से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा कि हमारी सॉइल पहले बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है पेस्टिसाइड्स की वजह से। एसिडिक से हल्का सा न्यूट्रल की तरफ हमारा वाटर फ्लो वो चला गया, और कंडक्टिविटी हमारी स्लाइटली इंक्रीज हुई। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन है जो आपकी सैंड होती है और जो आपका ग्रेवल्स होते हैं उनमें थोड़े से सॉल्ट एसोसिएटेड होते हैं, उस वजह से कंडक्टिविटी, राइट? So we thought that okay fine this experiment is successful, but ये up to the mark नहीं, right? तो since हम बंगला में रहते हैं तो बंगला अगर आप लोगों ने कभी बंगला विजिट किया होगा, बंगला में पाम ट्री बहुत है, राइट? वहां पे एक रिजॉर्ट भी है पाम ट्री रिजॉर्ट के नाम से। तो उसका रीजन ये है कि वो सूखा एरिया ड्राई एरिया है, तो वहां पे पाम ट्री है, तो वहां पर स्टूडेंट बैठ के सर हम पाम ट्री को यूज करेंगे ऐसे टाइम ओके लेट अस यूज द पाम ट्री, ये भी रेजिड्यू है, जीरो कोई खर्चा नहीं है। पाम ट्री खरीदने जाओगे बाहर में थोड़ी ना मिलेगा, 1 रुपए का बंदा आपको 100 किलो पाम ट्री भी दे देगा, चलो 100 रुपए का दे देगा, राइट? देन वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। यहां पे हमने राइस स्टॉक को रिप्लेस कर दिया पाम ट्री के साथ, सेम सेटअप, सिर्फ राइस स्टॉक की जगह हमने पाम ट्री लिया, नेचुरल। तो जब हमने पाम ट्री लिया तो आप ये देखिए कि जो क्रिस्टल वाले डाई, पहले हमने डाई वाला एक्सपेरिमेंट किया, क्रिस्टल वाले डाई की एडॉप्शन 73% से 77%। For the adoption of crystal violet dye, palm tree was better than and which is locally available in Bangla. So at least कुछ ना कुछ तो बंगला के पोर्ट्स को हम जो है वो क्लीन कर सकते हैं, ऑल्दो जो रोडामिन टी की एडॉप्शन जो है वो इसमें थोड़ी सी कम है। तो यहाँ से हमारा ये श्योर हो गया कि जब पाम ट्री अगर आप पॉल्यूटेड वाटर में डालोगे तो कुछ ना कुछ एडॉप्शन ये जो है वो जरूर करेगा, राइट? Then what we did, we used a combination of a rice straw and pump, राइट? उसके बाद हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया, और अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखिएगा तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 1386 से 7.43 और 44 है, और यहाँ पे 5.93 जो है वो इट वाज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट? 5.93 इसकी टर्बिडिटी पहुंच गई और कम होगी, और जो पीएच थी वो थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज हुई है, लेकिन कंडक्टिविटी इसकी जो है वो डिक्रीज हुई। दैट इज अ वेरी गुड साइन, right? First two cases में, so the combination of rice straw and palm tree was very good for the water filtration system, right? And I'm repeating again that it was no cost water filtration system, right? So first we used rice straw, then palm tree, then rice straw and palm tree, और काफी ज्यादा टर्बिडिटी हमने कम कर दी, but we wanted to achieve something more। हम थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करना चाहते थे कि भाई ये बात नहीं बन रही है, थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करें, राइट? So what we try to do, हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सिंथेटिक मॉडिफिकेशन जो है अपने फाइबर पे करते हैं। हमने राइस स्ट्रॉ के साथ बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन राइस स्ट्रॉ में सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम यूज करते तो फिर वो उसका फायदा नहीं होता कोई भी, लेकिन विद पाम ट्री इट वर्क, एंड दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट, राइट? ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने क्या किया, एक पाम ट्री लीफ लिया, उस पाम ट्री लीफ को सुखाया, उसका पाउडर बनाया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा एक गम प्रगाकन डाला, एक मोनोमर जिसका नाम है एडेलामाइड वो डाला। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर में क्या है। अल्टीमेटली एक चेन पाम ट्री लीफ की थी, एक चेन जो है वो गम प्रगाकन की थी, वो भी एक नेचुरल फाइबर है। इनको हमने क्रॉस लिंक करवा दिया बाय यूजिंग सर्टेन मोनोमर्स, राइट? एंड वी गॉट अ थिंग लाइक दिस। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहां से भी हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि देखिए जो आपका ब्लू में है वो पाम ट्री लीफ का फाइबर है, जिसका हमने लगभग 95% कंटेंट लिया है इस कंपोजिट में। उसके बाद गम प्रगाकन रखा है और इसको हमने क्रॉस लिंक किया है। अब आई एम अगेन सेइंग कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस स्लाइड शोज ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सैम है, स्टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जिसको बड़ी हाई मैग्निफिकेशन में लिया जाता है। पाम ट्री लीफ का सैम है, गम प्रगाकन का सैम है, कंपोजिट का सैम। अब कंपोजिट के सैम में आपको ये चीज में पोर नजर आ रहा है, राइट? इट इज अ पोर। ये जो पोर है इसके अंदर जब भी पॉल्यूटेंट जाएगा, इसकी वजह से आपका जो पाम ट्री लीफ है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाती है, और जब इसके अंदर पॉल्यूटेंट जाएगा
वो पॉल्यूटेंट के इसके अंदर एंट्रैप होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि आप मेरा जो कंपोजिट है दैट कैन एब्जॉर्ब मोर पॉल्यूटेंट इन कंपैरिजन टू द कॉन्क्रीट लीफ, ये हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इस तरह का एक कंपोनेंट जो वो हमने बनाया। देन वी अगेन डिड द सेम एक्सपेरिमेंट जो कि हमने आइसो और कॉन्क्रीट के केस में किया, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको शो करूंगा। सेम एक्सपेरिमेंट में किया ये केस, ठीक है। कंपोजिट को हमने बीकर में डाला और डाई सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, और अल्टीमेटली जब हमने डाई सॉल्यूशन में डाला, आपको याद होगा कि पुराने केस में हमारी एब्जॉर्प्शन कहां तक जा रही थी, 70% के आसपास जा रही थी, 60% के आसपास जा रही थी। और जब हमने कंपोजिट बनाया, आपके पॉल्यूटेंट की एब्जॉर्प्शन रीच अप टू 86% एंड 87%, 10% राइज इन एब्जॉर्प्शन। अब मैं यहाँ पे 10% बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा तो क्या होगा, राइट, बट इट इज अ वेरी बिग डील। अगर आप किसी भी चीज की एफिशिएंसी 1% भी बढ़ा देते हो तो इट इज अ वेरी बिग डील। 10% एफिशिएंसी जो है हमने उसकी कंपोजिट बनाते जो है उसकी बढ़ा दी। जब इसकी एफिशिएंसी हमने 10% बढ़ा दी, राइट, और इसको जब हमने कंपेयर किया आपके नॉर्मल फाइबर से, तो नॉर्मल फाइबर के कंपैरिजन में इट वाज कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग मोर क्वांटिटी। सो वी डिसाइडेड टू डिजाइन अ न्यू सिस्टम, न्यू वाटर फिल्ट्रेशन। दिस इज द न्यू वाटर फिल्ट्रेशन। अब इस वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम में हमने पाम ट्री लीफ और राइसो को छोड़ा नहीं, जो रॉ थे उनको नहीं छोड़ा, और कंपोजिट यूज किया। आप इमेजिन कर सकते हैं इस पूरे का वेट लगभग 50 किलो था, और इस 50 किलो में से सिर्फ हमने 25 ग्राम कंपोजिट यूज किया, जस्ट टू टेस्ट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 ग्राम कंपोजिट हमने यूज किया। और जब 25 ग्राम कंपोजिट हमने यूज किया तो बीज बदला। इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमने पानी दिया था, एक्सपेरिमेंट हमने थोड़ा लेट किया था, तो किचन से हमेशा पानी कैसे आता है, राइट। तो ये जो टर्बिडिटी थी यहाँ पे 3186 थी, यहाँ पे 2120 थी, एंड इट रिड्यूस टू 3.30। सिर्फ वो 25 ग्राम कंपोजिट यूज करने से टर्बिडिटी जो है वो इतनी ज्यादा आती है, राइट। आप सॉल्यूशन देखिए, पहले बहुत ज्यादा अल्कलाइन था, अल्कलाइन की बेसिक था 10.3 इसकी पीएच थी, और ये न्यूट्रल हो गया 7.15 हो गया। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा थी, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अल्टीमेटली slight modification in the natural fiber, right? In a fiber which is not generally of so much importance in the society to other people, it can create such a big. This was our solution. और ये जो हमारा सॉल्यूशन था, हम कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी क्रॉप रेजिड्यूज हैं, हम उन क्रॉप रेजिड्यूज को यूटिलाइज करके एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम रूरल इंडिया को, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूरल हिमाचल को देना चाहते हैं, ताकि जितने भी पॉन्ड्स हमारे रूरल हिमाचल में हैं, जितना भी डोमेस्टिक वाटर हमारा बाहर रूरल हिमाचल में जाता है, वो उस तरह की पोल्यूशन क्रिएट ना कर सके, ताकि जब वाटर स्कैर्सिटी से डील करने का टाइम आए, देन वी शुड बी रेडी फॉर दैट, राइट। सो दिस इज द थिंग वी हैव डन। सो 4 प्रॉब्लम्स हमने इस तरह से सॉल्व। अगर आप क्रॉप रेजिड्यू को यूज करते हैं तो आप एयर पोल्यूशन को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि उसको जो जलने की प्रॉब्लम है, अब मैंने पराली मेरी अगर मटीरियल होगी नहीं, तो उसकी जो उससे मटीरियल बनाने की इंडस्ट्री अगर बद्दी में होगी, तो बद्दी तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमने लोकल सॉल्यूशन हमने दिया, जिससे कि एयर पोल्यूशन की एयर क्वालिटी हमारे एरिया की मेंटेन हो सकती है। वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जिसको जनरली ट्रीटमेंट के लिए सोचा नहीं जाता, जैसे मैं आपको डाटा दे दिया, 50% से ज्यादा वेस्ट वाटर अनट्रीटेड इंडिया में रहता है, तो उसको ट्रीट करने के हमने सॉल्यूशन दिया। वो वेस्ट वाटर सॉइल में जाके आपके सॉइल को खराब नहीं करे, उसको ट्रीट करने के हमने सॉल्यूशन दिया, और अल्टीमेटली वी विल गेट द वाटर स्कैर्सिटी। दिस इज व्हाट वी हैव डन till date, or I cannot say that this is the ultimate solution. We are continuously working in this area with the civil engineering students. और ये जो आइडिया था हमारे मेरे स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 को शिमला में प्रेजेंट किया था, एंड दे गॉट प्राइज फॉर दैट, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि लास्ट वीक ही सेम आइडिया हमारा यूरोपियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री सेलेक्ट में वो पब्लिश हुआ। तो इसके बाद एक लास्ट चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन, इसमें मैं कहा था कि अगर आपको तो मेरे से क्वेश्चन देखिए, फाइबर दिया,
फाइबर को हमने मान लीजिए पॉन्ड में डाल दिया, पॉन्ड से उसने पॉलिटेंट निकाल के फाइबर को पॉन्ड के अंदर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी बीओडी बढ़ा दी, उससे हमने उसको बाहर निकाल दिया। जब हमने उसको बाहर निकाल दिया पराली को, तो उसका क्या? यस, दिस इज द प्रॉब्लम जिसको नहीं सोचा जाता है। अल्टीमेटली इट विल गो इनटू द सॉइल, इट विल गो इनटू द एयर, इट विल गो इनटू द वाटर। उसका क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम। पिछला काम तो मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, मैंने प्रेजेंट कर दिया, इट इज फाइन, बट पॉल्यूटेंट इज स्टिल इन द एनवायरनमेंट। सो देयर आर टू सॉल्यूशंस। वर्क एक सॉल्यूशन पे हम काम कर चुके हैं और थोड़ा सा और भी कर रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज, देखिए हमने पाम ट्री लीव से पाम ट्री लीव्स लिए, उसका पाउडर बनाया, पाउडर बना के कंपोजिट बनाया, कंपोजिट ने पॉल्यूटेंट अडॉप्शन करी जो मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूं। उस कंपोजिट को हमने फिर से ग्राइंड करके जिसमें प्रेजेंट है उसको हमने कंक्रीट ब्लॉक में। और अभी मेरे स्टूडेंट लोगों को प्रेजेंट करेंगे कि जब आप किसी कंपोजिट या फाइबर को कंक्रीट ब्लॉक में डालते हो तो उसको रीइंफोर्स कंक्रीट जो है वो बोला जाता है। वो उसकी वेट को कम कर देता है, उसकी थर्मल कैपेसिटी को जो है इंप्रूव कर देता है, आई कैन से आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, उसको इंप्रूव कर देता है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। हल्की सी वो कम, राइट। और अगर ये चीज हम करते हैं, चाहे हम सैंड को रिप्लेस करें और चाहे हम सीमेंट को रिप्लेस करें, कहीं ना कहीं हम माइनिंग को डिक्रीज करने में भी हेल्प करें। नो डाउट यहाँ बैठे कुछ ऑडियंस को लग रहा होगा कि इट इज लाइक कि हाँ भाई हमने मंगल ग्रह पे घर बनाया, ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, बट दिस थिंग इज पॉसिबल, राइट। अगर इसको फाइन ट्यून किया जाए, कॉन्फिडेंस से 10-12 साल इस पे काम किया जाए, देन दिस थिंग कैन, right? So thank you very much for being so very much wonderful audience. If you have any questions, please, students का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई भी इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहा हूँ, हम जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अपने आसपास डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकली सॉल्व हो सकती है, तो आप मेरे को इस मेल पे मेल कर दीजिए, मेरे को फोन करिए, हम उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन शायद निकल जाए। तो जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट साहब ने कहा कि जो रिसर्च होनी चाहिए, दैट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो एट आवर इंस्टीट्यूट वी आर करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Very, very knowledgeable talk. Sir, you have delivered a lecture on turning agriculture waste into environmental solution. A very knowledgeable talk. Sir has, because there is a demand of food, and also there is also increase of residue. We have to find out the solution for both food as well as the residue. So uh, the residue will be treated in many ways. Residue may be treated in recycling to make a concrete block, to make this fireboard, and also sir has given a very remarkable results to treat the water, because water is our lifeline. So all we know that we want clean water, free from pollutants. So if these byproducts, and also very cheap in cost, can produce such a better results, so we should go for this, and we have to also include these research into our policy matters. So thank you, sir. Thank you very much for this valuable talk. Now I invite all of you for a tea break. So after this, the session will also begin. A break of 5 minutes, sir? 15 minutes. 15 minutes. So please join in our physics lab. So please continue.